Good morning, students. Welcome you again. Okay, yesterday study and previous chapter about rocks and minerals, different type of rocks, igneous, sedimentary, metamorphics, and rock cycle also study yesterday, and rocks building, importance of rocks and minerals in our daily lives. There's a few topics we completed in previous chapter. Nowadays, today's we will study about important terms. Once again, quick revision of this following chapter. Crustal movement. Crustal movement of the crustal plates by which shape of the outer surface of the earth changes. This is a crustal movement. It may be natural activity, human activity. Due to the by this crustal movement, the shape of the earth surface is changed. Core is the innermost layer of the earth, which made of dense rocks. Mantle, the middle layer of the earth, located between the core and crust. Crust is the outermost and thinnest layer of the earth that form continent and ocean. This is the three main layer of the earth. And different type of rock, igneous rocks that are formed when molten magma cools down and solidified, also known as the primary rocks. Next, sedimentary rocks. When sediments of the fine rock particle are carried by the agent of nature and deposit in ocean or sea, they are hardened and compact in the layer. This is called sedimentary rocks. Means all the erosion activity erode the material and settle down in the another place. This is called sedimentary rocks. Metamorphics, when physical and chemical properties of the sedimentary and igneous rocks are changed due to intense heat and pressure, they turn into metamorphic rocks. Now, last rock cycle, the formation and reformation of igneous, sedimentary rocks and metamorphic rocks into another, along with their destruction, called rock cycle. Okay, these important terms cover all the important topics which we study in this chapter. Now, a summary you have to read at your home with the help of the book, and I hope you all almost student purchase this book from the market. It may be either you can collect a book from the school. Now, exercise you have to try to solve down it to your home, and a few questions you have to write down in your notebook. First, write about the three main layers of the earth. Given suitable diagram of explain it first. What are rocks? What are the three main type of rocks? Already we studied igneous, sedimentary, metamorphic. Their formation one by one you have to explain. Which are rock called primary rock and why? And enumerate the uses of rocks for construction, building houses, road, bridges. You have to write down about it. And with the help of a neat and diagram, explain the rock cycle. This 5 questions you have to write down in your book, notebook, and whenever school will be reopened, I will check these 5 questions from this chapter, and remaining exercise we will continue when school will be reopened. Short and briefly we will complete it. So first measure 5 questions you have to solve in your copy. Now, third chapter, our changing earth. Now, chapter third, our ever changing earth. This is third chapter, class 7th, for 15/7/20. Now, moment of the earth. Now, change the earth. How earth will be changed? It may be earth will not change the surface of the earth. It may be interior part, either outer part. It will be changed. The shape of the earth will be changed. In previous chapter already we study about the due to the internal activity of the earth.
when magma come out and solidify on the earth's surface, it may be create a mountainous, and then when erosion activity took place by the natural agent air, water, winds, so it deposit on other place. This is a sedimentary rocks, and the heat, due to heat and pressure, once again this rock converted into metamorphic. So when it activity going on the earth, so the shape of earth will be changed. Movement of the surface, already we study about the in previous chapter. Now, movement of the magma in the atmosphere, movement of these plates is as shown the few millimeters, and you still is change the earth surface, but this is not only reason. Okay, there are external forces well that lead to change on the earth surface. Force which affect the earth surface from its interior are called endogenic forces, and which affect the earth surface from the outer side called endogenic forces. Okay, it may be two type of forces. First, endogenic forces, then next exogenic forces. This is two type of forces, endogenic and exogenic. Which are endogenic forces? Force which affect the earth surface from its interior are called endogenic forces, and the force which forces which affect the earth's surface from outside are called exogenic forces. Okay, I think you understand, but once again you just go to definition. Endogenic forces, the force which affect earth's surface from the interior are called endogenic forces. It means when it is earth, then interior from the interior part of the earth, it means by the coming of the volcanic eruptions, movement of tectonic plates due to the earthquake, which change the shape of the earth. It is called endogenic forces. Endogenic. And when natural activity goes on, suppose erosion, earthquake, on the change of the erosion by the wind and water, where they erode the material and deposit on another place. This is called exogenic forces. This is exogenic forces. Then endogenic, from the interior side and from the outer surface of the earth, change due to the natural activity like by the wind, water. This is called exogenic, and from the interior part of the earth change its shape. It is called endogenic process. Now cause of movement. What are the cause of movement? क्यों चेंज होते हैं? मूवमेंट क्यों होता है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, आइदर आउटर पार्ट ऑफ द रिवर, जो मूवमेंट होते हैं वो क्यों होते हैं? Why these movements happen? This movement can change our lithosphere such as large extent. And what actually causes this movement? क्या कारण क्या है? It has been discussed, mentioned earlier, that core of the earth is not solid, even the upper mantle semi-solid, semi-molten. In previous chapter we studied about this is a semi-solid and semi-molten part. In the as we go deeper, temperature increase with the increasing of depth. जैसा जैसा हम अर्थ के इनसाइड में जा रहे हैं, the temperature will be increase. Yes,
ओके, विद द इंक्रीजिंग ऑफ डिप्थ इट मीन्स जब जितना हम डीप में जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है. इफ़ इट इज़ अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस एट एथनोस्फेयर एंड इट इज़ अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस इन द कोर. मीन्स एथनोस्फेयर जो आउटर आपका है लेयर क्रस्ट है वहाँ पर 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. जितना अपन डीप जाएंगे एटलीस्ट जो इनर पार्ट है कोर वहाँ पे आपको 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा. मीन्स जैसे जैसे डिप्थ में जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा. द हीट फ्रॉम द कोर जनरेट द कन्वेंशनल करंट इज मेंटल rising current of heat. Magma reach the top, cools down and again they become heavy, sink. This cycle of moving up and sink down of the magma cause this movement in slow motion is tectonic plates that float on the atmosphere. Okay, now as we mentioned in the previous chapter there are 6 major 20 minor plates, the crust, although these plates are made up of a solid rock. Okay, in previous chapter we studied about the 6 are major plates and 20 minor plates on the earth surface. These plates are made by solid rocks but they float on the molten magma. Okay, ये जो molten magma है इंटीरियर कोर जो पार्ट है कोर यहाँ पे molten magma है उसके ऊपर तैरता रहता है and they are lighter in density comparison to the mantle. Distribution and direction movement of these plates is given in map 3.1. इन 3.1 जो आपका मैप है उसमें इसका बारे में डिटेल दे रखा है, हम स्टडी करेंगे. बिफोर द स्टडी वंस अगेन वी जस्ट रीड दिस ग्राफ, दिस टेबल. मोमेंट ऑफ अर्थ. Moment of earth. Look here, two type of moment: endogenic forces, exogenic forces. Okay, endogenic is two type of force: sudden forces and dystrophic means slow forces. Exogenic forces can be divided erosional and depositional forces. Okay, once again it divide into river, wind, sea water or glacier. This one mountain building, folding, and third faulting. Sudden earthquake, volcanic eruption and landslide. This is are the major forces divided into subdivided this moment of the earth. Now in this map you will be find different type of plates, margins. These are destructive, constructive, conservative. When two plates move toward each other they collide and heavier plates subducts under the lighter plates. Such margins are named destructive plates. Okay, and this chapter we study about destructive and constructive and conservative. These 3 points we will study about it. Different type of plates, margin. Okay, destructive plates कब होगा?
डिस्ट्रक्टिव व्हेन टू प्लेट्स मूव टूवर्ड ईच अदर, जब दो प्लेट्स एक दोनों की ओर आ रही है, व्हेन कम्स टू ईच अदर दे कोलाइड एंड, ओके, दे कोलाइड एंड लाइटर प्लेट्स गो ऑफ एंड हेवियर प्लेट्स goes under. This is heavier, this is lighter plates go upward and the heavier subduct under the lighter plates. ये यहाँ पे heavier plates है, इसके नीचे आ गई, lighter ऊपर उठ गई. such margin are called destructive plates, और यही कहलाएगा आपका destructive plate. मीन्स दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे की ओर आती है और इसमें क्या होगा, लाइटर प्लेट्स ऊपर उड़ जाती है और हेवियर नीचे दब जाती है, तो यही कहलाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स. नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स. Constructive plates means in these plates are found where material from new plates is continuously coming up from the interior of the earth. इसमें ऐसा होगा आर फाउंड कि मटेरियल ऑफ फॉर न्यू प्लेट्स, जब न्यू प्लेट जनरेट हो रही है तो कंटिन्यूसली कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर जो पार्ट है अर्थ का, वहाँ से मटेरियल्स आता रहेगा. इट्स हैपन व्हेन द टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर. और कब होगा, जब टू प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएगी. जब यहाँ पे टू प्लेट्स है और दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहा है, सो यहाँ पे एम्प्टी प्लेस होगा, तो इनसाइड जो अर्थ है यहाँ से कंटिन्यूसली मटेरियल्स न्यू प्लेट्स का ऊपर आएगा. रिज आर फॉर्म देयर कंजर्वेटिव मार्जिन, और ये हाँ कंटिन्यूसली कमिंग फ्रॉम ईच अदर. इट्स हैपन व्हेन टू प्लेट्स आर मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर. जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इस हालत में वहाँ पे ये संभावना बनेगा. मोस्ट रिज आर फॉर्म एंड कंजर्वेटिव मार्जिन आर फाउंड वेयर टू प्लेट्स पास ईच अदर. और नेक्स्ट आता है आपका थर्ड कंजर्वेटिव प्लेट. कंजर्वेटिव प्लेट्स उस समय होगा व्हेन टू प्लेट्स पास ईच अदर साइड बाय साइड, नो डिस्ट्रक्शन और नो कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस. जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास में और जब दोनों एक दूसरे से पास में गुजर जाती है, कमिंग टू ईच अदर व्हेन पास, no constructive, either no destructive between them and pass through each other in different direction. So it may be we can say here conservative phase. Effect of the endogenic forces. Now effect of the endogenic forces, जब endogenic forces हमने देखा है, it may be sudden changes on the earth surface by maybe earthquake, volcanic eruption, landslide. So what are the effects found on the earth surface? Now as we have discussed earlier, then endogenic forces cause movement of the earth crust. जैसा कि हमने देखा अर्थ क्रस्ट मूवमेंट बदल जाता है इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण. दिस मूवमेंट कैन बी स्लो और सडन. सडन मूवमेंट में लीड टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शंस एंड स्लो मूवमेंट कॉज लैंड फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एज वेल एज एलिवेशन ऑफ माउंटेन एंड डिप्रेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज. स्लो मूवमेंट में भी कभी कभी माउंटेन बन जाते हैं और कभी कभी गहरी वैलीज जो घाटियाँ हैं वो बन जाता है. ओके, ऑफ द लैंड्स हाउएवर वी विल डिस्कस अबाउट वोल्केनो एंड अर्थक्वेक ओनली. हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ दो ही के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्केनोस. लेट्स स्टडी अबाउट वोल्केनो. ओके, वोल्केनो में इरप्ट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी वार्निंग इन एडवांस, मेकिंग देम वेरी डेंजरस. ओके, वोल्केनो जो ऐसा एक्टिविटी है, इट कैन बी इरप्ट एनी moment without any giving prior warning. It will not inform us, okay, I will be come, then you be alert. So it means sudden changes in the interior part of the earth. Means volcano may erupt any time without giving वार्निंग. ओके, ये वोल्केनिक इरप्शन जब होते हैं तो बिना वार्निंग के आते हैं, कभी कह के नहीं आते हम आ रहे हैं, कोई संभावना नहीं बनेगा. जैसे आपने देखा है बिफोर रेनफॉल
it may be create environment such as like I just say, it may be we just assume that it will be going to rainfall, but when volcanic eruption we cannot assume कि बरसात होने वाला है. जैसे आपने देखा बरसात होने वाला है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें अपने घरों में पहुंच जाना चाहिए, मौसम बन जाता है ऐसा. लेकिन यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन से पहले ऐसा कोई भी हम अज्यूम नहीं कर पाते कि वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक या ऐसी चीज़ें आने वाली, हम सावधान हो जाएं. Volcanicity or volcanism refer to all the process by which molten material magma is focused out of the interior of earth through the vent. Means volcanic eruption जो अर्थ है इसका जो इंटीरियर पार्ट है कोर, वो हीट मोल्टन मैग्मा से भरा होता है. मोल्टन मैग्मा से भरा होता है, हीट और प्रेशर दोनों होता है इसमें. और ये वेंट के थ्रू ही इट्स कमिंग आउट बाय द फ्रॉम द vent on the earth's surface. A vent is a fissure or fracture created in the crust leading to the earth's surface. ये वेंट जो होता है ये एक पाइप जैसा होता है जो कि मैग्मा अर्थ क्रस्ट पर इसके थ्रू ही बाहर आता है. इन द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन लावा, एश, रॉक एंड अदर फ्यू गैसेस कम आउट थ्रू दिस क्रेटर. इस क्रेटर के द्वारा यहाँ पे और भी कुछ मटेरियल है, लावा, एश, रॉक, गैसेस, ये बाहर आते हैं कम आउट थ्रू द क्रेटर क्रिएटिंग गिग्नेटिक फायरवर्क एंड एक्सप्लोजन. और यहाँ पे गिग्नेटिक फायरवर्क होता है एंड एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है. देयर एक्यूमुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस क्रिएट ए वॉल्केनिक माउंटेन. और ये एक्यूमुलेशन जो मटेरियल्स बाहर आता है ये क्रिएट माउंटेन क्रिएट कर देता है, ऐसा माउंटेन क्रिएट कर देता है. तो इससे अर्थ सरफेस आपने देखा है पहले ऐसा था और ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद यहाँ पे माउंटेन क्रिएट हो गया है. सेडिमेंट्स आ गए फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से, यहाँ सेडिमेंट्स डिपोजिट हो गया है. नो बेसिकली 3 टाइप ऑफ वॉल्केनिक आर फाउंड. देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनो. volcano found here. First, डॉर्मेट और स्लीपिंग. देखिए डॉर्मेट और स्लीपिंग वॉल्केनो वो होते हैं अ वॉल्केनो दैट स्टॉप इरप्टिंग इज सेड टू बी डॉर्मेंट. जो इरप्ट होना बंद हो गए हैं, कई सालों पहले इरप्ट हुए हैं, वो डॉर्मेट बाय द स्लीपिंग वॉल्केनो. द वॉल्केनो स्टॉप इरप्टिंग इज सेड टू बी डॉर्मेट और स्लीपिंग. इफ द वेंट और 5 if volcano is sealed by movement of the crust, volcano become extinct. Mount Fuji. Example, Mount Fuji in the Japan. Where is located? Japan. And Mount Kilimanjaro in Africa. On the contrary, a volcano that erupts from the time to time is called active volcano. And active volcano, a volcano that erupts time to time. Time to time, we can say that active volcano. And extinct, if the vent pipe or volcano is sealed by the movement of the crust, volcano become extinct. And one more, extinct volcano जो कि पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिनका मुंह बंद हो चुका है, सील हो चुका है, कैन बी extinct volcano. Okay, enough for today students. Whatever I teach you is read at home and try to understand the following points. If you are any doubt, you can ask me. Okay, and read these following points once again, and if you any doubt, you can write down question in your notebook and just ask me. Once again I will explain if you have any doubt, and try to solve this exercise first. I will give you questions in next lecture. Okay, thank you.